आगे हमारे बच्चों की presentations हैं. अगर if you wish to see, there are 3 cycles that you can hear. If you want to watch one and leave, that is also okay. But I would request you to stay back for at least one cycle. Okay, the Dosti project. This is one project that I missed talking about. After adoption of DCTO school, the community has been pushing us to adopt more schools. However, we decided to help other schools through the Dosti project by sharing our resources with them. Our first school in partnership is Wali Muhammad School, whose principal is a Kiran ambassador mother, Nafisa, who has joined us here today. Second school in partnership is Karabai Boys School, adopted by a local social worker, Mr. Hunain, who is also here today with us and has been connected with Kiran since past 4 years. और अब माशाल्लाह से वो जो लोकल लीडर्स हैं वो उठ के आ रहे हैं और स्कूल्स अडॉप्ट कर रहे हैं और हम सिर्फ उनके पीछे खड़े होकर उनकी हेल्प कर रहे हैं. सो दैट वे वी डोंट नीड टू अडॉप्ट ऑल द स्कूल्स आवरसेल्व्स. ओके, कैन वी मूव ऑन? So now I need to talk about the upcoming projects. This is very, very important. इसमें मुझे आपकी attention please चाहिए होगी. This is why we are here today, sitting together, because I wanted to propose the upcoming projects. So the first project is Ahmed. Yeah. We need to start thinking futuristically for the expansion of the preschool campus at Kati Pahari. It requires a primary section. The provision of building a second floor is provided in the existing structure. Ambreen has been kind enough to add another area of almost 100 yards to it, or little more. We would need an estimated 15 million for this construction. बच्चे अभी छोटे हैं, हमारे पास प्री स्कूल जितनी वहाँ जगह है, eventually ये बच्चे within another 2 years will need a primary school. तो अभी हमारे पास टाइम है, वी कैन स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन. एंड अम्ब्रीन हैज़ बीन वेरी काइंड कि वो कह रही हैं कि कंस्ट्रक्शन वगैरह सब चीज़ें मैं खुद इसको लीड करूँगी, बस वी जस्ट नीड टू रेज द फंड्स. द नीड फॉर अनदर सेफ एंड हैप्पी स्कूल इन लियारी इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे ड्यू टू द हैवी इनफ्लक्स ऑफ एडमिशंस एट DCTO. द थॉट ऑफ एस्टैब्लिशिंग आवर ओन स्कूल वॉज फर्दर इनकरेज्ड बाय एन एक्सट्रीमली हम्बल पर्सन. The thought of establishing our own school was further encouraged by Mr. Abid Saeed when he pledged 40 million in love of his mother for a school to be constructed in Liari. That was a huge pledge and I just could not believe it. Mrs. Malaika Saeed, she's sitting right here with us. Mrs. Malaika, you're a very, very lucky mother that you have a son who has done this for you. I wish कि सब बच्चों को अल्लाह ताला ये तौफीक दें कि वो अपने माँ बाप के लिए सदका जारिया बने जिस तरीके से उन्होंने किया है. So Jazakallah to Abid Saeed and Jazakallah to Malaika Saeed. You are here with us today. I'm so happy that you've come all the way. Thank you, Malaika. Thank you so much. However, now that we have 40 million for the construction, we need a land in Liari or somewhere surrounding area to bring this dream to reality. There are many go-downs lying shut since years in Liari. If any one of you could help us find their owners and convince them to donate a land for a good cause, we could set up our own school in Liari, which would also facilitate our registration as a school system. Because here we are working inside a government school. We don't have our own school. Liari is our hub, and we have an army of trained mothers who can actually run that school all by themselves. That's the beauty. अब ये स्कूल जब बनेगा, मलाइका जी वो हमारी मदर्स चलाएंगी क्योंकि वो इतनी ट्रेंड हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह. So we can't wait. So please help us out. अगर आप किसी को भी जानते हैं जिसके लियारी में कोई ज़मीन हो और वो हमें डोनेट कर सकें. Finally, SK Academy. ये बहुत मुझे आपकी सबकी तवज्जो की ज़रूरत है इसमें. Since a decade, I have been approached by many friends from the privileged community, extremely worried and concerned for their children. They have even requested for admissions in DCTO. We have hosted a few students for an year or above in our school here in DCTO, children coming from Clifton and Defense, to help them process their trauma. They have healed and moved on to mainstream.
और उनका हम जिक्र नहीं करते. However, many keep demanding a similar compassionate school system where the child is celebrated and accepted with all the limitations he or she has, where they can get mental health support and where mothers can feel safe too. I have met with cases where children from disturbed or broken homes are blaming themselves for their parents' unhappiness, resulting in severe damage to learning and growth. Such situations can be handled well, and children can grow up positively even with a single parent. Taking in account the need for a trauma-informed mother and child school, we have finally decided to take up this task. This school, the SK Academy, will be serving the elite and will serve as a financial endowment to Kiran Foundation because we are totally donor dependent right now. This will also become our own mainstream, and we won't need to mainstream students in any other school then. The gap will be bridged in our own school, giving a broad-minded approach to the entire school community. We have identified 2 spaces in Clifton. These were running as schools before and are up for sale. This space will also be utilized as Kiran Ghar in the evening for our 145 ambassadors who are studying at different schools and colleges as a study center. We plan to start the SK Academy as a preschool initially. We have raised 40 million for this and need support from all of you. Upon doing a lot of Reiki with Amreen, we are estimating around 260 million at least for acquiring a 1,000-yard constructed space for the purpose of the SK Academy. Next, we struggle with hiring upper tier management due to restricted funds. Hamare zyadatar funds, 97% are coming from zakat. So we cannot pay salaries to the upper management from the zakat funds. That's not allowed. However, our exponential growth demands some very important hirings. Please do approach us if you feel you can support in this area. I want to thank Mr. Faisal Hanif, who's sitting over here. Faisal bhai, aap kahan hain? Haath agar utha de. Okay. So I want to thank Faisal bhai for pledging the principal salary earlier today. Jazakallah. Thank you, Faisal bhai. So our principal has been sponsored, alhamdulillah. Every organization needs an endowment for stability and sustenance. We have managed to set up an endowment of 50 million so far, and we are hoping to double it this year. Do support us here if you believe in sustenance and stability. In a nutshell, these are the programs we need support in. You will find the same programs on your table, on your pledge cards also. आपके पास table पे ये एनवेलप रखा हुआ है. इस एनवेलप के अंदर एक ज़कात फॉर्म है. दिस इज़ फॉर यू टू कीप. ये ज़कात फॉर्म आपने नोटिस किया होगा, ये हमने रिसाइकिल किया है क्योंकि हमने 2 साल पहले इसको प्रिंट कराया था जब हम एक शाम शफकत बरी करने वाले थे. तो वी डिड नॉट मेक न्यू वंस, सो आई थिंक यू शुड अप्रिशिएट दैट. हमने इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट्स की हैं मार्कर से, तो प्लीज़ डोंट माइंड दैट. एंड देन इनसाइड द सेम फॉर्म इस एनवेलप पे आप देखिए सारे आपके you can write your name and everything over here. And if you have brought in a check or you want to put in cash, you can put it in this envelope, seal it because there's a seal on the envelope, and please drop it at the cash counter to Mr. Jawad. Inside there is another pledge paper. जो अभी डोनेट नहीं करना चाहते वो इस प्लेज पेपर को खोल लीजिए. इसमें ये सारे प्रोग्राम्स जो यहाँ आपको नज़र आ रहे हैं वो इसमें दिए हुए हैं. So you can mark whichever area your heart resonates with. You can even leave your donation to our for us to take this to decide where we want to spend. And please, your time that you've given today, that you've come here, is the biggest present and the biggest donation you've given today. You've broken the ice for Liari. ये बहुत बड़ी बात है जो आप यहाँ आए, ये ब्रिज बना है. And it's okay, it doesn't, it's not important that you have to pledge or give donation. You being here, listening to me, staying here, and listening to the children who are going to come here means the world to me. I can't tell you, my voice is breaking up right now. There was a time when I was used to come here, I had to face a lot of criticism from a lot of people.
एंड आई यूज़ टू हियर कि वहाँ कौन आएगा, तुम अकेले ही काम कर करके किसी दिन चली जाओगी दुनिया से। आज ये सब कुछ देख के मुझे इतनी खुशी हो रही है। एंड सबसे ज़्यादा जिसने कुर्बानी दी है वो सबसे आगे बैठे हैं इधर, मेरे शौहर, मेरे हस्बैंड। और इनकी कुर्बानी ज़ाहिर है मेरी एब्सेंस रही, मैं एक अलग दुनिया में रही, तो थैंक यू सिद्दीक फॉर कोऑपरेटिंग एंड बीइंग देयर ऑलवेज, क्वाइटली वॉचिंग मी डू द वर्क। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। My son is here too. Thank you, beta. Wasik. Wasik has been. Wasik कहाँ है बेटा आप? I want to really thank you. Wasik is that son कि जब मैं थकी हुई घर आती हूँ तो वो मेरे कंधे दबाता है, मेरे पाँव दबाता है, मेरे पाँव गोद में रख के दबाता है, मेरा माथा चूमता है। उसका हग इतना लंबा होता है कि जब तक मेरा दिल न भर जाए वो मुझे हग करता है। And that's the energy I get from him. My other children are not here. My daughter is in Canada. She has served a lot to Kiran. Usne actually, she is the co-founder of the Trauma Informed School System. She's a psychologist, now licensed in Canada. उसने यहाँ 4-4.5 साल देकर ये पूरा सिस्टम सेटअप किया है। मेरा बड़ा बेटा बोर्ड में है, वकास, ही लिव्स इन लाहौर। माशाल्लाह नेक्स्ट मंथ ही इज़ एक्सपेक्टिंग टू बिकम अ फादर, सो वो इसलिए यहाँ नहीं आ सका। तो अदरवाइज़ आई वुड हैव लव्ड देम टू बी हियर, और आप सब उनसे मिलते, क्योंकि ये वो लोग हैं जो इनके बग़ैर हम नहीं चल पाते। इनकी एनर्जी होती है हमारे साथ तो हम चल पाते हैं। सो जज़ाकल्लाह फॉर ऑल योर टाइम दैट यू हैव गिवन मी, योर ईयर दैट यू हैव गिवन मी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। Let's save our children by educating the caregivers, both the parents, on the true values of motherhood. आपकी मदद रहेगी तो हम मदरहुड को इंस्टीट्यूट बना देंगे इंशाअल्लाह ताला एक दिन। प्लीज़ नोटिस द एनवेलप्स, आप देख लीजिए, आपके टेबल पे पड़े हैं। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। मी एंड माई लीड मदीहा, वेयर इज़ मदीहा? मदीहा, कैन आई सी यू? Okay, so you can ask me any questions. I'm going to step down afterwards. I'm going to sit somewhere back there. अगर आपको मुझसे कोई सवाल पूछना हो तो you can come to me. Samia and Abda from our board are here. They know everything in and out of Kiran Foundations. You can ask them also if you know them. Shazia is here. My entire board is sitting over here. Shabana is sitting in the front. Nausheen is there. General body members are sitting there. Anwar भाई हैं, सईद भाई जान हैं, ये सब हमारे board members हैं। आप अगर टेबल पे देखेंगे तो आपके पास बोर्ड मेंबर्स की भी पूरी एक लिस्ट सामने है, सो यू कैन सी दैट ऑल्सो। एनीथिंग रिलेटेड टू अकाउंट्स यू कैन गो टू द काउंटर ओवर देयर, मिस्टर जवाद इज़ सिटिंग देयर, ही विल हेल्प यू आउट। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप कैश छोड़ के जाएँ तो उसी वक्त रसीद प्लीज़ ले लीजिएगा, डोंट लीव द कैश विदाउट रसीद। एंड बाकी हमारे बच्चे यहाँ घूम रहे हैं कार्ड्स पहन के, तो अगर आपको कोई पूछना हो तो आप हमारे बच्चों से भी पूछ सकते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत, आपका बहुत बहुत एहसान रहा कि आप आए इधर, और आप वाकई मेरे मोहसिनीन हैं जी। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का। को होस्टिंग के लिए मुझे ज्वाइन किया है हमारे बड़े ही एस्पायरिंग एम्बेसडर हैं हसन। ये सेंट माइकल में ज़ेर तालीम है, स्पोर्ट्स और एजुकेशन दोनों में ही बहुत आगे हैं। हसन, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने मुझे इतने अच्छे तारुफ साथ बुलाया ऊपर। आई एम रियली ऑनर्ड टू बी हियर, और इस शफकत भरी शाम को होस्ट करने के लिए इट्स हैज़ बीन अ गुड रेट थ्रू आउट, एंड आई एम थैंकफुल टू किरण फाउंडेशंस टीम। मोर देन वेलकम। चलते हैं किरण कहानियों की जानिब। रूमी ने बड़ी प्यारी बात कही है कि वूंड इज़ द प्लेस वेयर लाइट एंटर्स यू। किरण कहानियाँ इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ की सूरत में बड़ी मकबूल हो रही हैं, सामने आ रही हैं। इन कहानियों के सुन के जहाँ आपकी आँखें भीगेंगी वहाँ आप मुस्कुराएंगे भी, और आपका यकीन पुख्ता हो जाएगा कि अगर आपके अंदर जज्बा हो, हिम्मत हो, कोई गमगुसार हो, तो आप अपनी ज़िंदगी के अंधेरों को रोशनी में तब्दील कर सकते हैं। तो सबसे पहले किसे बुला रहे हैं आप? Let's start with Hamad Sohail. He has been like my big brother, and Hamad bhai has could be said as a boy of lot of hobbies. चाहे फोटोग्राफी की बात कर लें, चाहे बीट बॉक्सिंग करवा लें, कोई फिटनेस करवा लें, या कोई से फुटबॉल खिला लें, हर जगह हमाद भाई की हॉबीज़ हैं, और टू बी ऑनेस्ट ही इज़ एक्सेलिंग इट। लेट्स कॉल हमाद भाई ऑन द स्टेज टू शेयर हिज किरण कहानी। आइए हमाद, अपनी कहानी सुनाइए। Hello, Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing good. I'm Hamad Rana, and I'm generally known as a brave and a confident human.
But today I need to dive into a new reservoir of courage to share my personal story in a crowd as big as this. And this is my first time. But I really want to do this to strengthen the belief in the role of a caring adult in the life of a child. Hence, I'm happy. So I was 3 years old when my parents brought me to Kiran Foundation. Little did I know that my mother was disturbed due to the disloyalty of my father, which was affected to her. She was hurted by. She hence approached Sabina Khatri, who had come to Liari to offer a preschool program for both mother and child to face her challenges with dignity and grace and become the role model for all of us. Kiran thought of every aspect of my life: financial, social, mental, and emotional. Seeing my mother in pain, I started developing rage for my father, which was affecting my mental health too. But due to the continuous support of Kiran, I learned how to channelize my anger, accept the situation, and even forgive my father in the long run. And I could only do that because my mother didn't allow his deceptions affect her. She found healing in discovering herself. She found freedom in forgiving him. And I'm grateful to Allah Pak that I found the best angel parent who not only supports my education but supports my hobbies too. I'm a photographer and I earn through covering small events. I am certified from Shapes as a fitness trainer. And I could only do that because of the support of Imtiaz uncle, who was placed in my life through Kiran's Angel Parent program. I'm studying in IOBM right now, Institute of Business Management. I'm pursuing software engineering. Oh, that's me. Software engineering, and which I always wanted to do when I was a little kid. What else I could have asked for? Allah Pak has put me through ordeals just to make me a better person, to give me a bigger purpose in life. And I know that I can help many children like me who are struggling with rage, anger, and maybe a shattered mother. Through Kiran Foundation, I got the opportunity to become the listener to many children like me. And a part of me enjoys listening to them. And to be honest, I think I can be a counselor too. Well, thank you all for being patient to hear my story. Last but not least, I would like to say that everything happens for a reason. And I believe that there's a bigger purpose behind every calamity we go through. This was the best lesson my Sabima taught me. And today, standing here, I want to tell her that I will never let you down. And I love you. Thank you. Hello. हेलो हेलो थैंक यू हमाद मुझे यकीन है कि आपके जो एंजल पेरेंट हैं आपकी प्रोग्रेस और पर्सनालिटी देख के उनका सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता होगा इम्तियाज़ साहब जो कि हमाद के एंजल पेरेंट हैं वो हमारे एक और एम्बेसडर के भी एंजल पेरेंट हैं और बड़े हॉलिस्टिकली इनकी लाइफ में इन्वॉल्व हैं इनके मेंटोर हैं आइए उनकी वीडियो देखते हैं और उनकी फीलिंग्स सुनते हैं अस्सलाम वालेकुम जी मेरा नाम इम्तियाज़ आखूंद है और ज़ाहिर है कराची का हूँ और मेरी पैदाइश जो है अपनी क्या कहते हैं खारादर की है तो इट वाज अ वंडरफुल कोइंसिडेंस कि आई मेट सबीना खातरी मतलब आई एम अ बिग एडमायर ऑफ हर और उनके जो लोग हैं उनकी पूरी टीम है क्योंकि आई हैव बीन फॉलोइंग देम सिंस आई हैव दीज 2 kids विद मी आई थिंक दे वर अबाउट 3 year old in those days. Now I think Hamad is 18 and Jawad is 19. Talking about these 2 kids जो मेरे ज़ाहिर बच्चों की तरह हैं I have 2 girls in Austria they are माशाल्लाह 32 and 35 तो उस ज़माने में मैंने कहा चलें ठीक है अब मेरे 2 बच्चे हो जाएंगे Jawad is a diamond Jawad is a diamond but Hamad is a diamond he is a jewel he need to go in some profession where his personality can where he can improve his personality like media like IT in a way कि वो मैनेजमेंट में जाए
और सोशली ही इज़ अ वेरी गुड, इज़ अ चार्मिंग बॉय। मुझे पता होता है कि किरण फाउंडेशन में क्या हो रहा है और बच्चों की डेवलपमेंट और उनका किरदार, उनका वे ऑफ लिविंग, और जिस तरह फाउंडेशन की ग्रोथ हुई है, आई बीन फॉलोइंग सिंस। हमाद इज़ अ रियली चार्मिंग फेलो, माशाल्लाह बॉडी बिल्डर भी है, एंड आई थिंक इन सम काइंड ऑफ अ कंपटीशन ही गॉट द थर्ड प्राइज़। और जिस बात को मैं एम्फेसाइज़ करूँगा वो यही है कि जितने भी बच्चे हैं, ख़ासकर जिनको आप अडॉप्ट किया है, जिनका आप ख्याल कर रहे हो, उनके साथ डे टू डे बेसिक पे कनेक्शन रखें, उनको मॉरल सपोर्ट करें, उनको बताएं कि व्हाट इज़ लाइफ अबाउट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आता हूँ उनके साथ, काफ़ी गपशप होती है, खासकर हमाद तो मुझे बचपन में बड़े लतीफ़े वगैरह सुनाता था, लेकिन मैं उसकी वीडियोस को भी बाज़ औक़ात फॉलो करता हूँ, तो पीपल एडमायर हिम इन अ वे, एंड दैट इज़ ग्रेट। थैंक यू। Thank you, Imtiaz Akhund Sahab, for supporting us. And I would like to take this moment to thank our sponsors of today's event. Thank you, Sugarders, Feroz 80, 888, Mills. Thank you, Mentoring Hub, Pakistan Beverages, Pakistan Medics, Hajra Textile, Barbecue Tonight, and all those who had made this event possible. थैंक यू सो मच टू ऑल अवर स्पॉन्सर्स जिन्होंने आज की हमारी इस तकरीब को चार चांद लगा दिए। फर्स्ट टाइम हम किरण फाउंडेशन में हम इतना लग्जरियस इवेंट कर रहे हैं, एंड इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच। किरण फाउंडेशन में तरजीही बुनियाद पर माओं की तरबियत, तालीम और इस्लाह के ऊपर काम किया जाता है। And for that, I would like to call a mother. आइए एक मदर की कहानी सुनते हैं। इसके लिए I would like to call Miss Tahmina Baloch on the stage. She has raised her boy as a single parent, Mustafa. Mustafa is currently in a mainstream school, Happy Home, and he has been raised by his mother's support. Miss Tahmina works in Salmagar as an employed, and she is a really brave woman, to be honest. आइए Miss Tahmina. आइए इस ब्रेव खातून से मिलते हैं। तहमीना आइए स्टेज पे। Assalamualaikum. My name is Sabina Baloch. I am a bit nervous, but I will try my best to tell my story. I got married at 17 after completing my matric. I got married to a man who was irresponsible and was on substance abuse. Abusive from day one. It did not refrain from being physical. वो शादी के दूसरे दिन से ही मुझ पे तशद्दुद करता रहा। I gave birth to a baby boy in the first year. It did not refrain, even abusive the child. After 3 years of marriage, I was fed up. One day, I found the courage to ask him why he treated me and our child so abusively. मैं अपनी ये परेशानियाँ अपने माँ बाप को भी नहीं बता सकती, क्योंकि हमारे मुआशरे में शोर की शिकायत लगाना बुरी समझा जाता है। On asking this question, he beat me up badly and told me outrightly that he will give neither give me any money nor give me a respect. It disliked me from the very beginning. वो मुझे कहता था कि आप मुझे शुरू से ही पसंद नहीं हो, ना मैं आपको रिस्पेक्ट दूंगा, ना मैं आपकी खैर करूंगा। आपको जाना है तो अपनी माँ बाप के घर चले जाओ, क्योंकि मैं शुरू से ही आपको पसंद नहीं करता। Finally ended up giving me a divorce. By this time my son was 2. तलाक़ के बाद मेरे माँ बाप ने भी मुझे सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि उनको लगता था कि डिवोर्स मैंने खुद लिया है, तो मुझे अपने घर से आने से भी मना कर दिया। Completely shattered with no one to understand me, I approached Kiran for help. They engaged me in their cottage industry work. From there, doing talent of Balochi embroidery. I want to मैंने जब अपने माँ बाप को ये बात बताई कि मेरा शौहर मुझसे ऐसी ऐसी बातें करता है, तो उन्होंने मुझे बिल्कुल ही मना कर दिया
कि आपको रहना है तो वहीं रहो, अगर हमारे घर पे आओगे तो मेरे अब्बू ने कहा मैं आपको मार डालूँगा। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। I placed my son at the Kiran school, and from there he was prepared to enter a mainstream school. An angel parent given to my child, and from there he was supports all expenses of the school. फिर मुझे भी पढ़ाई का शौक़ हुआ, तो मैंने मैम सबीना से बात की कि मुझे भी अपनी पढ़ाई जारी रखनी है, जबकि मेरे लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि मैं ट्यूमर पेशेंट भी थी उस वक्त, तो मुझे बहुत पढ़ाई मुश्किल लग रही थी, लेकिन मैम सबीना की सपोर्ट ने मैंने ये कर लिया। माशाल्लाह से मेरा इंटरमीडिएट हो गया, मेरा बैचलर कंप्लीट हो गया। Thank you. I am a strong and happy single parent of my child. I want to help others now. Let everyone that does life and a marriage breaks. It's Allah Pak way of giving us another chance to become a grateful again. Thank you so much. Jazakallah. मिस सबीन, मिस तहमीना की तो बहुत ब्रेव स्टोरी थी। अब अगली कौन सी कहानी आ रही है हमारे सामने? अगली कहानी से पहले मैं एक शेर सुनाना चाहूँगी कि हर एक बात को चुपचाप क्यों सुना जाए, कभी तो हौसला करके नहीं कहा जाए। कहते हैं इंसान की शख्सियत उसके दिल का आईना होती है। हमारी अगली आने वाली एम्बेसडर भी कुछ ऐसे ही हैं। उनकी शख्सियत का ऑरा बड़ा ही स्ट्रॉन्ग है, स्पोर्ट्स, एकेडमिक्स सब में आगे हैं और आज ये ब्रेकिंग सोशल नॉर्म्स के हवाले से बात करने आ रही हैं। मुक़द्दस, आप जहाँ कहीं भी हैं आ जाइए और अपनी कहानी सुनाइए। Assalamu everyone. So, I was born in a male-dominating society. However, coming to Kiran changed that, at least for my family. Despite being bullied for my skin color, afro hair, and chubby physique at school and college now, I believed in a more important aspect of my beauty. So I was praised by a few caring people of my life, which gave me the confidence of feeling enough, alhamdulillah, because they praised me for my sports, confidence, and my, learning caliber. So I actually felt bad for my brothers around me in this society because they were being blamed as a whole for the state of female in our society. While it may be true that many men have severely done wrong to women, but younger men growing up to be adults need to be spared from these generalized statements. They have a right to be humanly vulnerable. I fear that statements like "ladke rote nahi" are now going to become the reason of raising yet another generation of hard-hearted men. So what do? Firstly, sadly, our brothers do not have many kind male role models. And I truly feel for them because at a point where you see evil, look to it, but still turn back to it, at that certain point you could do something to that, but you say no to. But I choose to say it because I came off my bubble, and this confidence comes from getting greater education and caring adults, obviously, in my life. And this is me, Muqaddas, and I dream of contributing towards the society as a brave, honest, and conscious woman who can help those who are being bullied as well as those who become bullies. So, and I'm really thankful to all of those who criticized me. Because of them, actually, I lost my weight. And thank you so much. जी हसन, कौन है हमारी अगली मेहमान? For the next person I'll be calling up, she could be said as a supportive person. Miss Sania Adil Dalal has always supported Kiran in all their causes. She has not only served as a friend, not only as a donor, but as a well-wisher. Miss Sania has been always with part of Kiran. Our own Kiran ambassadors go to Literature Junction, our book reading club managed by her. Please come up on the stage and share your feeling, Miss Sania. Wherever are you? Welcome, Miss Sania. Assalamu alaikum, everyone. That was a very long walk. Sorry about that. I actually wrote something, but I think whenever I come here,
the best thing to do is just talk from your heart. This place has no judgment. The students here, they're full of so much love. And I think that this is the place which will truly bring real change in our country, which is really needed. That it's the need of the hour today. So let me just tell you a little bit about Literary Junction. My daughter, she's here today, and we just celebrated her 10th birthday yesterday. But if you ask me, my real baby, my first baby, was my book club that I started when I was 23, 24 years old. And if LJ was my first baby, then Kiran Foundation has actually been its first companion since LJ's conception in 2010. I've had their children attend my book club through various stages of growth when they were shy little babies, and now it is amazing to see the confident, handsome, beautiful children that they have become. Many children have come and gone, but what remains constant has been Kiran Foundation's core values. Their goals have been very simple from its onset. They believe in a holistic approach and work on the child's educational trajectory along with their mental health. Our goal to provide with a platform to express themselves through language and reading is something that binds LJ and Kiran Foundation's core philosophy. Alhamdulillah, we've had a smooth journey, and I have found Kiran Foundation students to always be honest, confident, forthcoming, and extremely loving. The fact that they involve the mothers in taking a part in their child's extracurricular activities is also very impressive. I'm very happy to say that our affiliation with Kiran Foundation will last till LJ's last dying breath, and I'm hoping to see all my students' names in lights in the future. You will always have our unwavering support and love. If there's anything that I would like to end with is, aap log yahan aaye hain, you should donate generously, of course, but when you go home, please talk to your children, talk to your grandchildren, get them involved in this system. This is the one program in this country that is really going to bring change. Thank you so much. And I love you, children. I miss you all terribly, those of you who are coming. I am so, so proud of you. Thank you. थैंक यू सानिया, आप जैसे अच्छे लोगों की ही वजह से आज किरण फाउंडेशन अपने पाँवों पे खड़ा हुआ है. So, अगली कहानी कौन सी है मिस सबीन हमारे साथ? है तबस्सुम हमारे लब पे अभी, है तबस्सुम हमारे लब पे अभी, हम कहाँ ज़िंदगी से हारे हैं. वाह. अगली कहानी सुनाने आ रही है हमारी DCTO पेरेंट, एम्बेसडर पेरेंट हुमैरा. ये बड़ी ही बहादुर खातून है. इसके अलावा ये हमारी टीम मेंबर भी हैं, और हुमैरा ने अपनी फैमिली में सेहत के हवाले से बहुत चैलेंजेस फेस किए हैं. आइए सुनते हैं इस बहादुर खातून की कहानी कि कैसे उन्होंने इन आने वाले चैलेंजेस को ओवरकम किया. Assalamu alaikum. I'm Humaira. I have been associated with Kiran since 2014. I'm a mother of 3 daughters. All of them have been nurtured through Kiran education program. Kiran nurtures a mother along with the child. I went through this process too. When I came here, I was very shy, quiet, and unhappy person. I neglect myself since years. I didn't take care of myself. I was angry on my fate. I remember when I came here first time for attending a mother session with Sabina auntie, she told every mother wearing a lipstick as a prerequisite to attend this session. This may seem trivial, but it had profound impact on me. I did apply the lipstick, and she hugged me and told me how beautiful I am. It was something which I was really missing in my life. That hug gave me the courage to face my trials, and now I'm working as a librarian at DCTO campus. Let me tell you what happens. My second daughter, Hamra, she was a tube-feeding baby from birth.
Later, she diagnosed a rare type of disease called cricopharyngeal eclasia. Many doctors told me she wouldn't live long, but I met a kind doctor who turned out to be my Masiha, gave me the courage not to give up. Dr. Saeed Ismail, who is right here, I would like to thank you from the heart and soul. You were with me. Without your support, मैं यहाँ तक आ ही नहीं सकती थी. Thank you so much. I'm sorry. My older daughter, she's going to Daud Public School and she got prepared by Kiran. It was another success. As I thought my life is getting smoother, my husband diagnosed with the cancer. And मुझे जितनी मोहब्बत अपने शौहर से है, शायद ही इस दुनिया में किसी और से हो. And मैं जैसे उन्हें देख रही थी तकलीफ में, it used to kill me every day. If there wouldn't have been the support system of Kiran, I would have lost my sanity. And Alhamdulillah, my husband is free of cancer now. Doctor told me my daughter won't live more than 7. She is 12, having food orally. And I'm really thankful to all of Kiran team. And Dr. Saeed, मेरी हर सांस आपके लिए दुआगू है जब तक मैं जिंदा हूँ. And Ma, this is for you. मैं आपकी हर मिशन के हर कदम पे आपके साथ एक बहादुर सिपाही की तरह रहूँगी, इंशाल्लाह. And thank you so much for listening me. And to my dearest Madhiya, I feel so blessed to have you in my life. Thank you. Thank you so much. Jazakallah. मिस हुमैरा, आप तमाम मदर्स के लिए एक मिसाल हैं. सो मिस सबीन, हु इज़ नेक्स्ट? जो यकीन की राह पे चल पड़े, उन्हें मंजिलों ने पनाह दी. अगली कहानी उस होनहार लड़के की है जिसने लियारी में तारीख रकम की. एक्चुअली यू नो देयर इज़ ऑलवेज अ टर्निंग पॉइंट इन समवन्स लाइफ. और मेरी ज़िंदगी में जो वो टर्निंग पॉइंट था वो था जब मैं 8th ग्रेड में किरण फाउंडेशन में आया था. जब गिर कर उठ कर आप किसी चीज़ को हासिल करते हैं ना, उस चीज़ में बहुत ज़्यादा आपको प्राउड फील होता है. और लियारी में उन्होंने अपनी तमाम मेहनतें, तमाम जुस्तजू इस बात पे लगा दी कि किसी तरह वो पाकिस्तान के बेहतरीन तरीन इंस्टीट्यूट लम्स तक जा पहुँचे. और माशाल्लाह से आज माविया लियारी से लम्स पहुँच गए हैं. आइए उनकी कहानी सुनते हैं. एक्चुअली यू नो देयर इज़ ऑलवेज अ टर्निंग पॉइंट इन समवन्स लाइफ. और मेरी ज़िंदगी में जो वो टर्निंग पॉइंट था वो था जब मैं 8th ग्रेड में किरण फाउंडेशन में आया था. जब गिर कर उठ कर आप किसी चीज़ को हासिल करते हैं ना, उस चीज़ में बहुत ज़्यादा आपको प्राउड फील होता है. My name is Mavia Yunus and I am the first person from Liari who made it to LUMS. और मुझे यकीन है कि मेरे बाद बहुत से बच्चे आगे इसी तरह LUMS जैसी बड़ी इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेंगे और अपने ख्वाबों को पूरा करने की कोशिश करेंगे. My early education was from PF based मसरूर, जहाँ से मैंने 7th grade तक पढ़ाई की थी. And then in 8th grade I came to Kiran Foundation and I got admission in their adopted school DCTO campus.
जहाँ से मैंने 2019 में अपना मैट्रिक कंप्लीट किया विद ए ग्रेड, और उसके बाद आई वाज ऑफर्ड स्कॉलरशिप इन वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट इन कराची विच इज़ आगा खान कॉलेज करीमाबाद, डेट टू फ्रॉम द सपोर्ट ऑफ किरण फाउंडेशन। और 2021 में मैंने वहाँ से अपना इंटर कंप्लीट किया विद 92%। वाइल आई वाज इन सेकेंड ईयर, जब मैं अपने मिड्स के एग्ज़ाम्स दे रहा था, इट वाज द मंथ ऑफ दिसंबर, तो लम्स के एडमिशन्स ऑफ़र होना शुरू हो गए थे जिसकी डेडलाइन फ़ेब की थी। तो 1 महीने का प्रोसीजर करने के बाद जो फॉर्म्स उनका होते हैं वो सारे कंप्लीट किए मैंने, फिर मैंने अप्लाई किया सक्सेसफुली, और मार्च में मेरा LCAT का टेस्ट हुआ था जो मेरा बहुत अच्छा रहा। उसके बाद फिर आई वेंट थ्रू द प्रोसेस, टेस्ट वगैरह करने के बाद फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव अर्नड 100% स्कॉलरशिप फ्रॉम लम्स। इट वॉज़ फ्यू वीक्स अगो, जब मैं बैठा था अपने ईमेल्स चेक कर रहा था, ऑब्वियसली आई वाज वेटिंग फॉर एन एडमिशन ऑफ़र। तो मैं रोज़ उठकर सबसे पहला काम यही करता हूँ, मैं अपने जीमेल चेक करता हूँ। तो मैं उस दिन स्वाइप कर रहा था, इतने में रिफ़्रेश होकर टॉप में एक ईमेल आ गई, उसमें लम्स लिखा था। जैसे ही मैंने ईमेल देखा, वो मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, बहुत बड़ी सी स्माइल आ गई, और मेरे सामने ही मेरी मदर बैठी थी। तो मैंने उनकी तरफ देखा, मैंने उन्हें कुछ कहा नहीं, कुछ बताया नहीं, सिर्फ वो स्माइल देकर वो खुद समझ गई थी कि क्या हुआ है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि लम्स की ईमेल आई है। मैंने कहा जी माँ, लम्स की ईमेल आ गई है। सो शी वाज सो हैप्पी एंड नर्वस एट द सेम टाइम, क्योंकि नाउ आई विल बी लिविंग फॉर लाहौर एंड दैट टू फॉर 4 years, एंड शी वाज द फर्स्ट पर्सन आई टोल्ड। उसके बाद मैंने डायरेक्ट अपना फ़ोन निकाला, व्हाट्सएप खोला, और मैंने मॉम सबीना को मैसेज किया। सो शी वाज एज मच एज हैप्पी एज माई रियल माँ। व्हेन आई टोल्ड मॉम सबीना, तो उनका जो एक्सप्रेशंस थे ना, मैं उनके मैसेज से ही वो पढ़कर पहचान गया था। शी वाज लाइक वाओ, दैट्स सो अमेजिंग, द बेस्ट न्यूज़ आई हैव हर्ड टुडे। Born and raised in an area like Lyari, I faced struggles both socially and financially, जिसके थ्रू एक बचपन से ही फास्ट पेस्ड लर्निंग एक्सपीरियंस करने को मिला मुझे। आफ्टर आई कम्प्लीटेड माई मैट्रिकुलेशन, तो एक अच्छे कॉलेज में जाना बहुत ज़रूरी था लम्स तक पहुंचने के लिए। ऑल द थैंक्स गोज़ टू किरण फाउंडेशन, जिन्होंने मुझे स्कॉलरशिप दिया आगा खान में पढ़ने के लिए। वहाँ से पढ़कर फिर ऑब्वियसली आई नो आई हैव नो लिमिट्स नाउ, आई कैन रीच एनी वेयर आई कैन। एक्चुअली यू नो देयर इज़ ऑलवेज अ टर्निंग पॉइंट इन समवन्स लाइफ, और मेरी ज़िंदगी में जो वो टर्निंग पॉइंट था वो था जब मैं 8th ग्रेड में किरण फाउंडेशन में आया था। माई लाइफ चेंज्ड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, यानी कि यहाँ आने के बाद जो मेरा माइंडसेट था, जो मेरा विज़न था, वो बिल्कुल चेंज हो चुका था। हालांकि आई वाज गोल एम्बिशियस बिफोर एज वेल, लेकिन यहाँ आने के बाद एक कहते हैं एक जो उम्मीद होती है, जो ख्वाहिशें होती हैं, वो छत पर थी मेरी। किरण ने उन्हें उठाकर आसमान पर रख दिया था। दैट्स हाउ आई डिस्क्राइब इट। द थीम और कॉन्सेप्ट जो किरण ने यहाँ स्टार्ट की, मदर चाइल्ड स्कूल और ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड स्कूल, इन बोथ सिस्टम्स में थीम ये होती थी कि मदर चाइल्ड स्कूलिंग सिस्टम में माँ को भी बच्चे के साथ साथ स्कूल के जो एक्टिविटीज़ हैं, उनकी पढ़ाई है, उनमें इन्वॉल्व किया जाता था, जिससे बच्चे का स्कूल में तो माशरा चेंज हो रहा है, माहौल चेंज हो रहा है। जो चीज़ें वो बच्चा स्कूल में सीख रहा है, वही घर जाके भी वो सीखने को मिलती है, और घर का भी माहौल साथ ही उसका चेंज होता जाता है। तो इस हिसाब से ये होता है कि दोनों जगह से जो सपोर्ट मिलता है, उससे बच्चे का जो माइंडसेट है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगता है। द प्रैक्टिसेस विच वर कॉमन हेयर, जैसे कि काइंडनेस कह सकते हैं आप, सपोर्ट सिस्टम कह सकते हैं यहाँ किरण फाउंडेशन में, इट वाज रियली अमेजिंग। यानी कि एक बच्चे की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट देते हैं उन्हें। अगर आप नॉर्मली किसी और स्कूल में चले जाएं, मैंने 4 स्कूल शिफ्ट किए अपने बचपन से मैट्रिक तक, तो मुझे अंदाज़ा है कि दूसरे स्कूलिंग सिस्टम में किस तरह माहौल रहता है। तो वहाँ नॉर्मली यही होता है कि आप फ़ीस दे रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके ग्रेड्स बन रहे हैं, आप घर जा रहे हैं। लेकिन यहाँ जो है आपकी ग्रेड्स के पीछे का जो आपका सफ़र है, पीछे की जो ग्रोथ है, उस पर बहुत ज़्यादा वर्क किया जाता है। आपके मेंटल हेल्थ पर, आपके माइंडफुलनेस पर, आपकी जो ओवरऑल ग्रोथ है, इंसान की जो ओवरऑल जिस्मानी और रूहानी ग्रोथ होती है, उस पर बहुत ज़्यादा वर्क किया जाता है। तो इट इज़ रियली अमेजिंग एंड आई विश कि ये जो स्कूलिंग सिस्टम है, ये पूरे पाकिस्तान में अमल किया जाए इस पर, ताकि मेरी तरह के और भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो आगे आ सकें। और जहाँ तक मेरिट की बात करें, तो लम्स का जो प्रोसीजर है, इट्स रियली अमेजिंग। यानी कि जो वहाँ पर जो मेरिट बेस पर एडमिशन्स दिए जाते हैं, यानी कि अगर मेरे जैसा बच्चा लियारी में बैठकर घर से यहाँ से अप्लाई कर जिसका ना कोई कनेक्शन है, ना कोई रेफरेंस है, कुछ भी नहीं है, अगर वो मेरिट की बेस पर वहाँ एडमिशन ले सकता है। और अगर दूसरे इंस्टीट्यूट्स में ये सेम प्रैक्टिसेस अप्लाई किए जाएँ, मेरिट बेस्ड एडमिशन सिस्टम जो है, तो इसी तरह मेरे जैसे और भी जो बहुत सारे बच्चे पूरे पाकिस्तान में, सिर्फ कराची में नहीं, जो बैठे हैं अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हैं, तो भी इसी तरह वहाँ अचीव करके वहाँ पहुँच सकते हैं एंड दे कैन मेक देयर गोल्स अचीवेबल, और अपने ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं। इफ़ आई हैव टू डेडिकेट माई सक्सेस टू समवन, सो ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट वुड बी माई मदर, मेरे पेरेंट्स होंगे, और किरण फाउंडेशन एंड ऑब्वियसली मॉम सबीना। आई वुड डेडिकेट ऑल ऑफ माई सक्सेस टू देम।
वन मैसेज विच आई वुड लाइक टू फॉरवर्ड इज़ डैट कि अपने ड्रीम्स की कभी भी कोई लिमिट नहीं रखनी चाहिए। आपकी जहाँ तक सोच जाती है आप वहाँ तक ख्वाब देखें और उन ख्वाबों को पूरा रखने की खुद में जस्तजू भी रखें और हमेशा एक बिलीफ अपने अंदर रखें कि आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। यू कैन अचीव इट एट एनी कॉस्ट नो मैटर वट कम्स इन योर वे। इफ़ वी टॉक अबाउट द डेडिकेशन एंड मोटिवेशन तो डैट वाज ऑल फ्रॉम माय पेरेंट्स। मेरे पेरेंट्स का हमेशा से ही मुझ में सपोर्ट रहा है बहुत ज़्यादा, बी इट इमोशनली और फाइनेंशियली। जिस तरह से भी उन्होंने हमेशा अपना कंप्लीट मुझे देने की बिल्कुल कोशिश की है। ख़ासतौर पर मेरी मदर ने मुझे बहुत इमोशनली सपोर्ट किया है। और उसके बाद जब यहाँ आया किरण में तो मॉम सबीना थी यहाँ पर, उनका सपोर्ट भी मुझे काफ़ी ज़्यादा मिला और उन्हीं से ही मैंने परसिवरेंस सीखी है कि कभी भी गिर कर पीछे नहीं रह जाना है, गिर कर हमेशा उठ के आपको आगे भागना है और मज़ीद ज़्यादा तेज़ आपको चलने की हिम्मत करनी है। माविया, आप फ़ख्र लियारी और फ़ख्र पाकिस्तान हैं। बेशक। मैं तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। 19 lakhs हैव बीन प्लेज्ड सो फार। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह हमारे साथ चलते रहिए, हमारे मिशन को फैलाते रहिए, हमारी किरणें बनकर पाकिस्तान में रोशनी बन के आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच।